दिस इज़ द टाइम फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। जो जितना भी विंटेज कार्स है वो सारा कार्स का अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आगे का प्रोग्राम अभी चालू है। तो चलिए आगे का प्रोग्राम आप लोग को दिखाते हैं। हम चाहेंगे हमारे जो बैंड म्यूजिशियन हैं और हमारे Mohammed Joseph is a very good singer of Jamshedpur. I would request him to sing us some song, some beautiful song. So, to support him. Lot of Austins, yeah. Yes, my grandfather used to have a car. A lot of beards as well, the old beard. Old models of the beard. आज हमारे सुपरवाइजर हैं जिन्होंने ये रैली की शुरुआत की। एक बस क्रिएट किया है, इसमें तो मैं अनुरोध करूँगी रंजन कुमार सिंह से कि ये आकर अपने ग्रुप के बारे में बताएं और वे क्या करते हैं, ये सुपरवाइजर्स क्या करते हैं उनकी जरा ब्रीफ दें। अच्छा, वो जो हम लोग क्लब में मीटिंग वाला पूरा ग्रुप है ना, लड़का बहू। क्या यूट्यूबर है क्या? यस सर। ये बाइक कितना पुराना है सर? 1942 1942 ऑलमोस्ट। बाकी डिटेल इनसे लीजिए। 98 बेटा मेरा चलाता है, इनसे ले लीजिए, पूरा डिटेल बताएंगे। माई सेल्फ समरेश। सो सर बाइक के बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को। 1942 एक्सेलसियर वेल बाइक मार्क 1 सीरीज़ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई थी, मेड इन इंग्लैंड। और इसका वेट 32 kg है अप्रॉक्सीमेट। फोल्डिंग है, हैंडल फोल्ड होता है, सीट बनी थी पैराट्रूपर्स के लिए, सोल्जर्स के लिए। प्लेन से लेकर इसे कूदा करते थे पैराशूट के साथ, नीचे लैंड करने पर ये पुश स्टार्ट करके वॉरफील्ड पे जाते थे। तो स्पेसिफिकली 1500 पीस के करीब प्रोड्यूस हुए थे, जिसमें 70% वॉर में ख़त्म हो गए। कुछ बचे पीसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड बचे हैं बस, जो रनिंग है। हमें भी मिली थी, बहुत स्क्रैप कंडीशन में थी, हमने लेकर इसको रिस्टोर किया वापस। फिर आप लोगों ने रिस्टोर किया जी सर। क्या फोल्डेबल है, थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा। सीट को एडजस्ट करके हाँ ऊपर कर सकते हैं। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। अच्छा, नीचे ही जाएगा। और ये हैंडल फोल्ड नीचे का पर्पस क्या है? क्योंकि फोल्ड करके इसको बॉक्स में पैक किया जाता है, बॉक्स प्लेन से या पैराशूट में पीछे लेके या बॉक्स। अच्छा, कहाँ से फोल्ड होता है सर? एक सीट फोल्ड होती है, एक हैंडल पूरा नीचे आ जाता है। स्टार्ट होता है ये पूरा नीचे।
after some time. My mind wants to let go. Tropical therapy makes me a purpose. Go when I look at you, oh, all the love. Whoa, don't I look so fine, oh, girl, I wanna make you mine, oh. I need to be with a woman just like you. Whoa, 'cause I'm the only one, oh, who can love you like I can, oh. So let me be with the woman that I love. Whoa, 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 whoa. Let's stay real good. I wanna get close to you. रिजल्ट्स आने में भी थोड़ा टाइम है तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पार्टिसिपेंट से मिस्टर गुरमुख सिंह खोखर से कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मारुति जब आई तो प्लग है 10,000 किलोमीटर चला, इसको हटा दो। पहले मैकेनिक होते थे कि कोई चीज खराब हुई तो उसको कैसे बना के चलाना है, वो कल्चर लगभग खत्म हो गया अभी। और मारुति के टाइम जब से आई है इंडिया में, तो यही है कि अब इतने किलोमीटर इसकी लाइफ है, इसको बदलते चले जाए। लेकिन इन गाड़ियों को देखिए आज जो चलती हैं, कई बार गर्म हुआ, कुछ गाड़ियों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल रैली में सब आई, यहाँ पहुंची और कोई बेटर हुआ। तो मैं पुनः एक बार टाटा स्टील को धन्यवाद देता हूँ। इस परंपरा को निभाएं और आगे भी रैली का आयोजन करते रहे ताकि हम लोग को भी इसमें भाग लेने का मौका लगे। I think the judges are sitting and calculating the scores. So it's taking too much time. I'm sorry, a bit warm, but enjoy the music and the experiences of our participants here. And I'm told that it should be over shortly. So vitamin D at its best. Waves carry voices from somebody else's baby. We can shake the rock. The love we have together just fades away in time. I'm not yeah, yeah, yeah. We'll wait for our fate. Somebody else's baby. We can shake the rock. It's been recently purchased by them, and they're very enthusiastic to bring the car up to better standards. Thank you for participating, Mr. Singh. The next prize is for the oldest two-wheeler to participate in the rally, and that goes to the 1939 James ML of Mr. Anand Sharma. Incidentally also scored very high overall. The best restored car of the rally is the 1955 MG Magnet of Mr. Darshan Sangvi from Calcutta. That's car number 18. There she is, ladies and gentlemen, the 1955 MG Magnet of Darshan Sangvi. The next trophy is for the longest distance traveled by road to participate in the rally. So will Mr. Devaprem Chatterjee's representatives please come up for his 1960 Ambassador Mark 1 and his 1964 Fiat Super Select. This is for the longest distance driven by road to participate in the rally for cars. The fifth trophy that we have is for the longest distance transported by carriage or truck to participate at the rally, and that goes to the 1963 Triumph Spitfire of Mr. Shoikat Datta. That got the most attention from participants and the press. Yes, ladies and gentlemen, that's the bright red two-door roadster owned by Mr. Shoikat Datta, the Triumph Spitfire.